Today I will be talking to you about this sweet poison and the antidote of this poison, which is insulin. And I will be talking to you about insulin therapy for type 2 diabetes mellitus, how to initiate, when to initiate, and then how to titrate and intensify the treatment. And I will be briefly touching upon the conventional insulins that we've been using for many decades now. It's 100 years of celebration of insulin last year, and now the newer generation of insulin or analogues. So अगर आपके पास पेशेंट आया तो आप पहला सवाल बीइंग डायबिटिक आप पूछते हैं शुगर कैसी है, और मरीज का जवाब होता है डॉक्टर साहब शुगर बिल्कुल ठीक है, कितनी, फास्टिंग 200-250, रैंडम 300, बिल्कुल ठीक, कंट्रोल है. So patients very often try to bluff with the doctor saying that sugar का कोई मसला नहीं है, वो ठीक है, अब ये मसला है. But we all know that diabetes is a growing concern for every one of us. Around the globe, it has turned into an epidemic, but particularly in Asia, Southeast Asia, and Pakistan, it is rising with every passing day. And we have achieved number 3 position in the world where the diabetes burden is the highest. And this is really alarming. In the world, if we talk about 1 in 9 adults, they are diabetic. 1 in 10 adults, they are either pre-diabetics. 1 in 18 adults has impaired fasting glucose level. There are 1.2 million children and adolescents below the 20 years of age who are living with type 1 diabetes mellitus, and it leads to about 6.7 million deaths every year. And 3 in 4 people with diabetes live in low and middle income countries. And unfortunately, Pakistan is also one of them. And we have a severe economic burden because of the treatment of the diabetes that we have to offer to our patients. So if I talk about top 10 countries with diabetes, we all know that Pakistan is number 3. And in adults aged 20 to 79 years, the diabetes-related health expenditure, if we compare it with the countries with lesser burden, is much lower in countries like Pakistan and India, because we are underdeveloped or low or middle income countries. So that the need of giving attention to the treatment of diabetes and spending on the patient care is, there's a great imbalance between the burden of the disease and the amount of money that we invest in the healthcare of these patients. And when we talk about type 2 diabetes, I'm very glad that we are having this course for the last so many weeks now, in which we are updating the knowledge of our family physicians, which are the backbone of our healthcare system. And diabetes is the major chunk of the disease which they see there in the clinical practice. So whenever we talk about treatment of type 2 diabetes, we always talk about diabetes education first, which involves telling the patient what this disease is, what they need to do, what changes they have to take in their lifestyle, in their diet, in their weight control. And number 3, checking of the blood sugar level or self-monitoring of the blood glucose level, which is also equally important in diabetes education. And then telling the patients to look for complications, early diagnosis of any micro or macrovascular complications, any red flag signs, and this will prevent them from the long-term complications like retinopathy and heart disease. So why is it important to control your blood sugar levels? Is it just treating the numbers, or there is an added benefit? If we control our blood sugar levels, obviously there is an added benefit. And the epidemiological extrapolation showed by the UKPDS, it showed that benefit of a 1% reduction in mean HbA1c level leads to 21% reduction in the deaths related to diabetes. Similarly, only reducing HbA1c to 1% leads to lesser microvascular complications like kidney disease and blindness by 37%. There are lesser chances of heart attack by 14%.
The leg amputations or the foot amputations of peripheral vascular disease also improves by 43% if we control our blood sugar levels. And there is reduced incidence or prevalence of stroke if HbA1c levels are decreased by 1%. And there is a term which we call as metabolic memory, or we call it a legacy effect, in which if we see the data of UKPDS, which is one of the biggest or landmark trials of the diabetes treatment. So we had two groups. One was intensive and the other was conventional treatment. So we thought that obviously because we are giving intensive therapy, the blood sugar control will be better. So the blood sugar control, if it is better, it is translated in terms of decreased microvascular complications, decreased myocardial infarction, or any diabetes-related endpoints. And we did see that in a period of 20 years trial of UKPDS, there was a remarkable reduction in any diabetes-related endpoint, microvascular disease, and myocardial infarction. But we thought, why not follow up these patients without any intervention for a longer period of time? So for another period of 10 years, they were just studied. And it was seen that after 30 years from the initiation of trial and 10 years after the completion of the trial, there was still the benefit of intensive control of blood sugar. And this is known as the metabolic memory. So tighter the control in the initial phase of the diabetes, the better it is to prevent long-term complications in these patients, even when you're not giving any intervention in that trial. So this is known as the metabolic memory and legacy effect, which has shown tremendous benefit in the life. So the data has shown that insulin has the highest potential of decreasing the HbA1c if we compare it to both oral and injectable therapies. We didn't use the term injectable therapies before because we didn't have GLP-1 before. But now the data has shown that even if we compare it with injectable therapies like GLP-1 and oral antidiabetics with a very good glycemic control like sulfonylureas, which are not the first line prescribers in the influential countries, but still in the lower and middle income countries, the highest efficacy is of insulin if used as a therapy, single therapy. So insulin is the best if we talk about diabetes control or bringing down the HbA1c only. So talking about the exogenous insulin therapy. So insulin therapy actually becomes necessary because of the nature of the diabetes, nature of this disease. We all know that it starts with insulin resistance, obesity being one of the risk factors, which leads to impaired fasting glucose, and then gradual beta cell failure leading on to diabetes. And then with the course of diabetes going on for years and years, your insulin levels start decreasing, and insulin resistance is also there, leading to uncontrolled hyperglycemia. So this is the time when you need to give patients something to control your blood sugar levels, and beta cell are already failing, and you need to give something which is not produced inside the body to counteract this hyperglycemia. So if insulin level is continuously decreasing with the progression of disease, this is the time when need to identify the need of giving an exogenous insulin therapy to these patients. So when to start insulin therapy? This is the next question. How early is early when we are initiating insulin therapy? So at the diagnosis of diabetes, is that the early insulinization? Is it when there is secondary oral anti-diabetic failure? Because we feel the need, because we cannot control the glycemia despite giving oral drugs, should we start insulin then? Or should we start insulin when patients have developed chronic complication, then there is no other choice? So those who think that we should start insulin right from the diagnosis of diabetes, please raise your hand. Those who feel that after the failure of oral anti-diabetic drugs, we should initiate insulin therapy, please raise your hands.
Okay. Very good. So you remember. And chronic complications, obviously, we want a better glycemic control because we need to add years to the life of the patient. And that too, quality of years is also important. So in the Asian context, we all know that we eat curries and rice and food which has high glycemic index. And the postprandial glucose response to a meal is more pronounced in Asian population. So the agents and insulins which target our postprandial blood sugar are the choice in our set of people. And the recent studies have shown that initiating insulin with premixed analogues is an effective strategy to improve glycemic control because they have minimal risk of hypoglycemia in this population. And then we also know that glucose lowering is not the only effect that we are looking for. And we know that insulin, though, has the highest effect on the HbA1c level and it decreases our blood sugar levels, it also has some added benefits. And we want to get benefit of these added effects of the insulin, like it preserves beta cells. Unki burnout nahi hone deti. Then it corrects the endothelial dysfunction. Then insulin is a very good anti-inflammatory product. Then it has antiplatelet effects, and it improves the overall quality of the life with improving the glycemic control. Similarly, it leads to decreased glucotoxicity and lipotoxicity. And diabetic dyslipidemia also gets better when you give insulin. And the insulin resistance also decreases. So there, beyond the glycemic control, there are so many added benefits of insulin that we want to take use of. So the insulin is given to prevent micro and macrovascular complications. And we are giving insulin not just to achieve the target of lowering your blood sugar, but not treat failure. It shouldn't be that now the oral antidiabetics have failed and now I have no other choice. So now I am going to start insulin. You have to treat to target. कि मैंने अपना टारगेट अचीव करना है, as early as possible आप टारगेट अचीव करेंगे, the metabolic memory or the legacy effect will improve the quality of the patient's life in the long term. So remember, treat to target and not treat that everything has failed and I have no other choice. And time is essence, ladies and gentlemen. When therapy with multi-oral agents fail, exogenous insulin is required and is usually added to one or more of the existing regimes of the oral agents that you are prescribing. But by the time insulin is initiated, a lot of patients have already had some kind of an organ damage. So more importantly, beta cell dysfunction is established and is at irreversible level. So please identify what is the right time to initiate insulin in these patients, because initiating at the right time is also very important. So let's look at what are the indications of insulin therapy. So insulin should be started when there is significant hyperglycemia, like HbA1c is way above your target, which is 9%. Your fasting blood sugar level is more than 250, and your random blood sugar levels is more than 300 milligrams per deciliter. Or when the patient is symptomatic, patient complains of severe persistent weight loss, polyuria, polydipsia, and when multiple non-insulin injectable or oral therapies have failed to achieve individualized glycemic targets. This is the time which you need to put the patients on insulin therapy. But apart from them, there are other indications of insulin therapy as well. Patients who are in some critical illness, koi surgery hui hai, koi acute emergency ho gayi hai, MI, this is the time that we give insulin to the patient in hospital settings. Patients with intolerance to oral agents, आप दवाई उसको दे रहे हैं पर उसको intolerant है, metformin को intolerant है, या SGLT2 inhibitors की वजह से उसको repeated UTI हो रहा है and is unable to tolerate the side effects,
or you can't give drugs because of some contraindication to these patients, like renal profile is grossly deranged, then you need to switch these patients to insulin therapy. And patients of LADA, which is latent autoimmune diabetes in adults, this is also one of the indications of starting an insulin therapy. Anyone who can tell me the contraindications of insulin therapy? Allergies? Underweight? Did somebody overweight? Overweight को insulin नहीं दे सकते? Okay, if actually speaking, allergy can be possible due to anything, you know, any drug. Allergic to a common हो जाता है. But if you ask me, there are none. There is no contraindication to give insulin. However, caution is required in the setting of underlying cardiovascular disease or other comorbidities with the risk of hypoglycemia. In overweight patients as well, we have to combine them with something which causes weight loss or use a newer analogues which have lesser effect on the weight gain. But then this raises another question. Before the patient is convinced, are you convinced yourself कि इस patient को मैंने insulin start कर देनी है? Because a lot of physicians also suffer from clinical inertia. What is clinical inertia? What is inertia? Yes, you're not ready to take that action which is required at that point in time. You know that this patient needs insulin, but you keep on saying कि चलो एक महीना और देखते हैं, चले अगली दफा आपको देखेंगे क्या करना है. So you should be convinced, and the conviction comes from knowledge. This gives you the power to take decision. And the knowledge comes from scientific research and literature. And this scientific and research and literature reaches you through communication, which can be in the form of lectures, which can be in the form of reading an article or updating your knowledge. So once you know what is the benefit, once you have that power to take a decision, only then you will be yourself convinced. And if you are convinced, it is easier for you to convince your patients through logic and through scientific data. So we should all be convinced first ourselves so that we can convince our patients that this is the time that we have to initiate insulin. और ये जो एक सुई का डर है ना, हालांकि अब इतने मॉडर्न पेन्स आ गए हैं जिनकी इतनी बारीक सी छोटी सी सुई होती है, वेरी कन्वीनियंट, बट स्टिल ये जो इंजेक्शन और सुई का डर है ये हमारे दिमाग से नहीं जाता. किसी बचपन में डॉक्टर ने वो इंजेक्शन लगाया था और वो मेमोरी में हमारी कहीं फिक्स हो गया है कि दिस इज समथिंग पेनफुल एंड इट नेवर गोज अवे. सो व्हाट आर बैरियर्स टू इंसुलिन इनिशिएशन? People's perception of needles is the number one. Then cultural and logistic factors. कि नहीं डॉक्टर साहब मैं कैसे लगाऊंगी, क्या मुझे कौन लगाएगा, किधर से आएगा, इंजेक्शन कौन भरेगा, मुझे तो नजर नहीं आता, डायल यूनिट नहीं समझ आते. So many things. मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं इंसुलिन दोपहर को कैसे लगाऊंगा, फ्रिज नहीं है, बिजली बहुत जाती है, फ्रिज में कैसे रखेंगे, इकोनॉमिक, इट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, दवाई सस्ती खिला दे हमें. Then ability of himself or caregiver to apply the injection. So these are some of the things which schedule the limit of its use. And this is a paper that I am sharing with you with the health quality life outcomes, in which they looked at the patient's perceptions and also the physician's perceptions to barriers to insulin therapy. And people who were willing to accept insulin therapy, even they had a large number of, problems or questions in their mind before initiating. They were willing, but still they thought that they can never stop insulin. Patient, मेरा इलाज ठीक नहीं हो रहा इसलिए अब मुझे इंसुलिन की जरूरत पड़ी है. They are not confident कि ये थेरेपी मुझे सही दी जा रही है. मुझे शुगर कम हो गई तो क्या करूंगा, मुझे दर्द होगी इंजेक्शन से. They still think they are willing for the injection. But let us look at those patients who are not unwilling. The ratio of these questions arising in their mind is much higher. And similarly, if we look at the perception of insulin therapy among treatment naive and experienced patients, treatment naive के जिनको पहले इंसुलिन नहीं लगी और एक वो जिनको पहले इंसुलिन लगी है,
वो सोचते हैं कि जिन्हें इंसुलिन लग रही है जी मेरी बहुत एडवांस स्टेज की डिजीज है, बीमारी बहुत बढ़ गई हुई है, मैं बहुत बीमार हूँ. देन वेरी राइटली पॉइंटेड अबाउट वेट गेन का कंसर्न होता है, इंजेक्शन का फियर होता है, डायबिटीज मेरी वर्स ना हो जाए इंसुलिन के साथ. So there are so many barriers to insulin therapy from the patient's perspective, and similarly from the physician's perspective as well. We are afraid that this is going to make them gain weight. We fear that what if patient goes into hypoglycemia? What if this is painful for the patient, he just leaves it and then goes into a hyperglycemic emergency? What if patient has to, go test HbA1c and they think that this is a painful procedure to go and check because बार बार इसके साथ हमें check करना पड़ता है. So there are barriers from the patient side as well as the physician side. Now coming on to different forms of insulin, because my topic was how, when, and then we also have to talk about some conventional and newer insulins. So there are 3 different types of insulin you can say. First is 2 basic types, and then there are different regimes. First is the basal insulins. Basal insulins, they suppress the hepatic glucose production and maintain a near normoglycemia in a fasting state. They can be long acting or intermediate acting. Intermediate acting में NPH हम यूज करते हैं, और जो long acting है उसमें glargine है, detamir है, degludec है, which are all analogues. Then bolus insulins. Bolus insulins are those insulins which we give to cover meals. Extra food की वजह से जो requirement है हमारी body के अंदर वो हम देते हैं. And then again, it could be a regular insulin which is short acting, or a rapid acting insulin in the form of analogues like Lispro, Aspart, and Glucine. So these are 2 major types, basal and bolus. And basal may we have intermediate and long acting. Intermediate is NPH, long acting is analogues, glargine, detamir, degludec. And in the bolus insulins, which are short acting insulins, we have regular insulins, conventional human regular insulin, or analogues in the form of Aspart. Now, this is a very easy to follow algorithm if you are initiating insulin in a patient for the first time, in a type 2 diabetic patients. So at the diagnosis, जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि कब आप इंसुलिन शुरू करेंगे, तो आपने मुझे बताया कि HbA1c से डिसाइड करेंगे. Right from the start of the patient, when oral antidiabetics fail, or when there are chronic complications and you have to have a better glycemic control. So if at diagnosis, patient's HbA1c is more than 9, his fasting blood glucose is more than 250, and random blood sugar levels of postparenteral glycemia is more than 300, or patient has any infection, sepsis, acute emergency like MI, unstable angina, DK, if patient is pregnant or he has undergone some surgery, then you start at the diagnosis insulin therapy in type 2 diabetic patients. But if your patient is not having these indications, then after the oral antidiabetic fail to achieve the target, fail to achieve the target, you start insulin therapy. If despite giving oral antidiabetic drugs, your fasting blood sugar levels is more than 50, your plasma glucose after meals is more than 200, and your HbA1c is more than 8.5%, and your patient is already on 2 or 3 oral antidiabetic drugs. So these are the indications by American Diabetic Association. जी वो इंडिविजुअलाइज्ड है, उस पर भी हम अभी बात करेंगे कि किस एज ग्रुप में क्या HbA1c रखना है. So once you start the therapy with insulin, always remember, start low and go slow. Okay, so remember, start low and go slow if you are initiating for the first time. Then you have to titrate the dose, and frequent dose titration is required. But frequent dose titration is not 3 times in a day. It is after 3 days. You check the blood sugar levels and then you adjust. सकते हैं आप शुरू तो फैटी पेशेंट को इनिशियली तो मेटफॉर्मिन से ही स्टार्ट करते हैं ना. इट स्टिल रिमेन्स द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस.
या अब हमारे पास जो एक्सपेंसिव थोड़े से एजेंट्स आ गए हैं, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दे सकते हैं, या SGLT2 का भी बहुत अच्छा रोल है वेट कंट्रोल के अंदर, देन यू कैन ऐड ऑन. और अगर आपको डर है वेट गेन का, एंड इफ पेशेंट इज अफोर्डिंग, यू कैन स्टार्ट ऑन एनालॉग्स व्हिच हैव लेसर वेट गेन. ठीक है. अगर आप ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स की बात करेंगे तो मेटफॉर्मिन हैज द हाईएस्ट कंट्रोल ऑफ HbA1c. ओरल में मैं बता रही हूँ आपको. ठीक है. लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इंसुलिन हैज द हाईएस्ट कंट्रोल. सो मेटफॉर्मिन इज स्टिल अ वेरी वेरी गुड चॉइस. ठीक है. सो सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ये आपका फर्ज है कि मरीज को सिखा के भेजना है. Once you initiate the insulin and you do not check the blood sugar levels on your patient, say that I don't have a glucometer or I don't have the facility to get your blood sugar checked, how will you titrate your patient? You need to titrate your patient. So you need ask them to make a blood sugar profile, and it will be only possible if they know how to check their blood sugar levels at home. And then patient education remains the cornerstone of therapy of diabetes, be it in the form of lifestyle modification, exercise, weight control, diet, self-monitoring of blood glucose, or injection of insulin, how to give, where to give, when to discard the needle, how to fill the needle, how to mix the needle, what time should we give insulin, what happens if patient has hypoglycemic event, what to do now. So the patient education is the main thing that you'll be stressing upon. And now I know with very busy clinics, with a turnoff of 100 patients in your clinic, you hardly have few minutes, maybe 2 to 3 minutes to give to one patient. एक स्टडी हुई थी जो बहुत बहुत दफा कोट होती है, जिसमें कहा गया कि 1.3 शायद मिनट्स, 1 मिनट 3 सेकेंड्स एक एवरेज टाइम हम पेशेंट को देते हैं इन आवर जनरल प्रैक्टिस. सो मुझे नहीं समझ आती कि 1 मिनट में हम मरीज की हिस्ट्री भी लेके, कंप्लेंट भी सुन के, दवाई भी लिख के, उसको बता के भी क्या लेना है, कैसे भेज देते हैं. बट दिस इज अ स्टडी जो पाकिस्तान से पब्लिश हुई और बहुत सारे फोरम्स के ऊपर, इंटरनेशनल फोरम्स पर डिस्कस भी होती है. सो वी नीड टू स्पेयर सम टाइम फॉर पेशेंट एजुकेशन. एंड इफ यू डोंट हैव टाइम, now many companies, pharma companies or other NGOs, they give you support in the form of diabetes educators to your patients, or a helpline service, free, call free or toll free number in which your patients can call and get guidance. So always facilitate your patients. It's better if they hear it from the doctor's mouth, because that is more effective, because they have a relationship with you. But if you can't give time to them because of a busy schedule, please make an effort to refer them to a counselor or a helpline which can guide them how to properly take medication and lifestyle changes. So the initiation protocol by ADO has been defined into step 1, 2, 3. This is the protocol that they train their doctors on initiation of insulin. So when you are initiating an insulin, then you initiate it either bedtime, NPH से हम start करते हैं, या अगर लॉन्ग एक्टिंग है जो कि एनालॉग्स में ही सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है, इसमें मैंने आपको बताया कि ग्लार्जीन है, डेटामेर है, रेग्लूटेक है, वो आप बेड टाइम या मॉर्निंग दोनों में दे सकते हैं. लेकिन एनपीएच को आप इवनिंग टाइम, बेड टाइम पे ही देते हैं. यू स्टार्ट विद 10 यूनिट्स या फिर 0.2 यूनिट्स पर केजी के हिसाब से, आप वेट के हिसाब से पेशेंट के स्टार्ट कर लें. एंड देन यू चेक फास्टिंग ग्लूकोज डेली फिंगर स्टिक से, and increase the dose by 2 units every 3 days until you reach your target. And your target for fasting blood glucose is 70 to 130. And if fasting is more than 180, then you increase the dose by, instead of 2 units, you 4 units for every 3 days. And जहाँ hyperglycemia को देखना है, साथ ही hypo को भी देखना है. So if hypoglycemia occurs or your fasting blood glucose level is less than 70, you reduce the bedtime dosage by 4 units or 10% if your dose is more than 60 units. Okay? So this is how you initiate. NPH at bedtime, अगर long acting दे रहे हैं तो bedtime या morning time दोनों दे सकते हैं, या 10 units से start कर लें, या weight को 0.2 से multiply करके उतने units दे दीजिए. और नहीं, जब इनिशिएट करनी है इंसुलिन तो आपने गो, स्टार्ट, लो, गो, स्लो. ठीक है. अगर पेशेंट का HbA1c 10 है और आप उसको
30 यूनिट स्टार्ट कर देंगे, आपको नहीं पता कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी उस इंसुलिन को, और वो अगले दिन हाइपो में आ सकता है. सो यू कैन, there's no emergency. Hypoglycemia is a more serious emergency than a hyperglycemia. So start low and go slow. That is the rule. So you check HbA1c after 2 to 3 months. जाहिर है इसके साथ आप चेक कर रहे हैं every 3 days और titrate कर दिया. Then you don't need to check it every day. You can ask the patient to check twice or thrice in a week. And then you check an HbA1c after 3 months. And if HbA1c is less than 7%, you continue the regime. And if it is more than 7%, then you need to move to step 2. Step 2 is changing the dose. Now, changing the dose is that you have to change or increase the dose, obviously, because it is not meeting the targets. And you change the dose only if 3 readings are outside your desired target range. और वो 3 रीडिंग्स कैसे बनेंगी? जब पेशेंट सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज करके फास्टिंग और पोस्ट पेरिंडियल लेवल्स चेक करके आपके पास प्रोफाइल बना के आएगा. सो यू इंक्रीमेंट देते हैं आप 10% का, या अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं बाय 20%, एंड देन यू रिव्यू आफ्टर 1 वीक. एंड ये नहीं कहना कि डू नॉट मिस द डोज ऑल टुगेदर, कि अगर आपकी कम आई है तो बिल्कुल बंद, डोज ना लें. यू टेल देम कि इतने परसेंट 20% डिक्रीज कर लें, कुछ खा लें. Now, intensifying insulin, there can be 3 things that you can do if you are not achieving the targets. एक आपने basal insulin patient को start की हुई है, तो the second step which is called basal plus. So आप basal insulin के साथ एक bolus insulin की dosage दे देते हैं. Then एक से control नहीं हुआ तो 2 दे देते हैं. 2 से control नहीं हुआ तो तीनों meals के साथ एक rapid acting दे देते हैं, which is called basal bolus regime. Okay, basal plus 1 with the largest meal, basal plus 2, or basal with all 3 meals, basal bolus regime. और basal plus आपने patient को दिया, patient control नहीं है, you can add a GLP-1 agonist if patient is affording, or you can switch the patient. वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे 4 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, एक रात को लगाता हूँ, एक सुबह दोपहर शाम आपने लिख दिया है, मैं तो सारा दिन सुइयों के चक्कर में रहता हूँ. So for convenience, you can switch them to pre-mixed insulins, जिसमें उसको 2 तरह की इंसुलिन नहीं लेनी पड़ती, एक ही तरह की लेनी पड़ती है और वो 2 दफा आराम से लगा लेता है. So inadequate control आपने कब कहना है? ठीक है, inadequate control है तो आपने next step पे move करना है. When HbA1c is above target, हमने target 7 रखा हुआ था, और या फिर fasting blood glucose तो उसकी target पे है लेकिन HbA1c ज्यादा है, या फिर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एट टारगेट है लेकिन पोस्ट पेरेंडियल उसकी ज्यादा आ रही है, और अगर उसको बहुत एक्सेसिव बेसल की जरूरत है, सो दैट मींस दैट यू आल्सो नीड टू कंसीडर इंटेंसिफाइंग द इंसुलिन थेरेपी. अब बेसल प्लस में आपने क्या करना है? बेसल प्लस में आप पेरेंडियल इंसुलिन देते हैं विद द लार्जेस्ट मील. पेरेंडियल इंसुलिन थी बोलस इंसुलिन जो मैंने आपको बताया था, व्हिच वर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जो कि रैपिड एक्टिंग एनालॉग्स भी हो सकते हैं और शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन भी हो सकती है. सो यू स्टार्ट विद 4 to 5 यूनिट्स और 10% ऑफ द बेसल विद द लार्जेस्ट मील ऑफ द डे. अगर डिनर हैवी है तो डिनर के साथ दे दे, लंच हैवी है तो लंच के साथ दे दे. और इफ HbA1c इज लेस देन 8 तो फिर आप बेसल के उतने यूनिट्स कम कर दें और उसको ऐड कर दें प्लस की फॉर्म में, और इसके साथ सल्फोनाइल यूरियास को बंद करना है आपने रैपिड एक्टिंग के साथ. एंड यू एडजस्ट वही सेम कि अगर आपकी 1 to 2 यूनिट्स इंक्रीज कर लें, या फिर अगर हाइपो हो रहा है तो आप 10 to 20% डिक्रीज कर लें. देन इज द स्टेप 2. स्टेप 2 इज अगेन इंटेंसिफाइंग द इंसुलिन. बेसल प्लस 1 था, उसके बाद बेसल प्लस 2 आ गया. अगर प्री लंच ब्लड ग्लूकोज इज आउट ऑफ रेंज तो आप रैपिड एक्टिंग ब्रेकफास्ट के ऊपर डाल दें. अगर प्री डिनर है आउट ऑफ रेंज तो फिर आप NPH एट ब्रेकफास्ट या फिर रैपिड एक्टिंग एट लंच डाल दें. और अगर प्री बेड ब्लड ग्लूकोज इज आउट ऑफ रेंज तो आप रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एट डिनर टाइम डाल दें. स्टेप 3. स्टेप 3 इज बेसल प्लस 2 और बेसल बोलस और प्रीमिक्स इंसुलिन. सो बेसल पे बेसल प्लस 1 था और स्टेप 3 पे बेसल प्लस 2 है, बेसल बोलस है या प्रीमिक्स इंसुलिन है. Step 3 में you check the pre-meal blood glucose levels. If they are out of range, तो आप उसके साथ एक rapid acting insulin डाल देते हैं.
एंड इफ A1C कंटिन्यूज टू बी मोर देन 7%, तो फिर आप 2 hours पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स देखते हैं और प्री पेरेंडियल रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं. ठीक है. Now there are some general rules that you can apply to insulins that I am sharing with you. Obviously they have to be customized to every patient's blood sugar profile, but general rules ये हैं कि अगर आपकी बिफोर ब्रेकफास्ट शुगर कम आ रही है तो आप बेसल को 20% डिक्रीज करते हैं. अगर आपकी आफ्टर मील्स ग्लूकोज लो आ रही है तो आप बोलस की डोज को 20% डिक्रीज करते हैं. अगर आपको नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, रात के वक्त पेशेंट उठ जाता है, पसीने आते हैं, देन यू डिक्रीज द बेसल डोज बाय 20%. और जो बोलस इंसुलिन है उसके जनरल रूल्स ये है कि अगर आपकी ग्लूकोज फास्टिंग बिफोर ब्रेकफास्ट जो है वो ज्यादा आ रही है तो आप बेसल बोलस को 10% इंक्रीज करते हैं, बेसल डोज को. और अगर आपकी आफ्टर मील ज्यादा आ रही है तो आप मील टाइम को 10% इंक्रीज करते हैं. अब प्रीमिक्स्ड इंसुलिन्स. प्रीमिक्स्ड इंसुलिन्स आर अ लिटिल कन्वीनियंट इन द सेंस कि आपको 2 इंजेक्शन लगाना पड़ते हैं, ऑलरेडी मिक्स्ड फॉर्मुलेशंस होती हैं. So when you have to start a pre-mixed insulin to somebody, then you start with patient's body weight in kg divided by 2. So for example, if a patient is 60 kg of weight, then you start 30 units of insulin. And in 30 units को आपने 3 equal parts में divide कर लेना है. So 10, 10, 10, 3 equal parts हो गए. 2 parts सुबह दे देने हैं before breakfast और 1 part before dinner दे देना है. So 2/3 before breakfast and 1/3 before meal at night. So this is the way to initiate premixed insulin. और इनकी डोज टाइट्रेशन जो है वो आपने वही 10% के हिसाब से करनी है. सो अगर आपका पेशेंट 10 यूनिट्स पे है और आपने 10% इंक्रीज करनी है तो 1 यूनिट बढ़ा देंगे. अगर आपका पेशेंट 20 यूनिट्स पे है और आपने 10% इंक्रीज करनी है तो 2 यूनिट्स बढ़ा देंगे. इसी तरह अगर हाइपो हो रहा है और आपने कम करनी है तो आप 1, 2, 3, 4 यूनिट्स अकॉर्डिंगली कम करते रहते हैं उसके. प्रीमिक्स्ड इंसुलिन्स को जब आपने एडजस्ट करना है तो ऑब्वियसली देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंसुलिन्स. ठीक है ना. ये इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन विद अ शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का कॉम्बिनेशन है. सो इफ देयर इज एलिवेटेड ग्लूकोज ड्यूरिंग द नाइट और अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, नाइट पे नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया है या फास्टिंग लेवल्स बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो यू इंक्रीज द इवनिंग डोज बाय 10%. अगर आपके एलिवेटेड लेवल्स ग्लूकोज के दिन के टाइम में सारे आ रहे हैं तो आप मॉर्निंग डोज को 10% इंक्रीज कर देंगे. और अगर आपके एलिवेटेड लेवल्स सुबह शाम दोनों ही ज्यादा हैं तो देन यू इंक्रीज मॉर्निंग डोज बाय 10% एंड इंक्रीज इवनिंग डोज बाय 10%. ठीक है, सिंपल. ओके. अगर आपके प्रीमिक्स इंसुलिन लो आ रहे हैं ग्लूकोज लेवल्स तो यही है कि आपने 20% डिक्रीज कर देनी है. मॉर्निंग की डोज आप डिक्रीज करेंगे अगर आपके ड्यूरिंग द डे ज्यादा आ रहे हैं और नाइट की डोज आप इंक्रीज करेंगे अगर अर्ली मॉर्निंग ज्यादा लेवल्स कम आ रहे हैं. इसी तरह अगर थ्रू आउट डे और नाइट पे आपको हाइपो की फीलिंग्स आ रही है तो आपने मॉर्निंग और इवनिंग दोनों की डोज 20% कम कर देंगे. अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको आपने NPH दी है, ठीक है, फिर पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो सिरिंज में लगानी पड़ती है, तो मैंने सुना है कि पेन भी आ गए हैं और वो इंसुलिन नई है और वो अच्छी है. यू हैव टू शिफ्ट टू योर पेशेंट्स टू ग्लाजीन. सो ग्लाजीन आर एनालॉग लॉन्ग एक्टिंग, सो यू शिफ्टिंग फ्रॉम इंटरमीडिएट टू अ लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग. सो डोज जो है वो 80% ऑफ NPH आपने देनी होती है लॉन्ग एक्टिंग के लिए. इसका एग्जाम्पल ऐसे है कि अगर पेशेंट 15 यूनिट्स ऑफ 70-30 BD ले रहा था सपोज, ठीक है, और तो इसमें 70-30 के अंदर आपकी 70 NA और 30 रैपिड एक्टिंग है. ठीक है, सो 70% NA और 30% रैपिड एक्टिंग है. तो 70% ऑफ 30 यूनिट्स को आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे और उसको 80% से मल्टीप्लाई करके उतनी डोजेज ग्लार्जीन की आप उसको दे देंगे. ग्लार्जीन की आसानी ये है कि आप इसको बेड टाइम भी दे सकते हैं और मॉर्निंग टाइम भी दे सकते हैं. प्रेफरेबली इसको भी बेड टाइम ही दे दिया जाए. अब एम इन डायबिटीज मैनेजमेंट क्या है? सो द एम इन डायबिटीज मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि पेशेंट का आउटकम बेटर होना चाहिए. पेशेंट का आउटकम कब बेटर होगा? जब ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा होगा.
और ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा होने के साथ उसके एडेड बेनिफिट्स है, उसका स्ट्रोक का इंसिडेंस कम है, उसको हार्ट डिजीज का इंसिडेंस कम है, उसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज होने का इंसिडेंस कम है, ठीक है। सो इम्प्रूव पेशेंट आउटकम के लिए डायबिटीज का ट्रीटमेंट इज नॉट ओनली गिविंग इंसुलिन, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन इट। पेशेंट कहेगा, आप चाहेंगे कि पेशेंट का कंट्रोल भी बहुत अच्छा हो, पेशेंट सेटिस्फाइड भी हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो, उसके बहुत पैसे भी ना खर्चे हो, खर्चा भी बहुत ना हो, उसको कोई पेन भी ना हो, उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी मैं डिले कर लूँ, उसको हाइपोग्लाइसीमिया भी ना हो, तभी फायदा है ना, तभी पेशेंट विल बी सेटिस्फाइड एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। और ये बहुत विशफुल थिंकिंग है कि ये सब कुछ ही हम चाहते हैं, और फिर चाहते हैं कि सस्ते में सस्ते से सस्ते में भी हो जाए, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, थोड़ी सी चीजों की कीमत होती है। सो उसके लिए यू इम्प्रूव और यू अपडेट, एंड व्हेनेवर यू अपडेट, फोन चेंज करते हैं, नया मॉडल लेते हैं, महंगा ही आता है ना, पिछले से सस्ता तो नहीं आता। सो यू इफ स्विच फ्रॉम वन ट्रीटमेंट टू अ बेटर ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली यू हैव टू पे अ कॉस्ट, बट दैट कॉस्ट हैज टू बी वेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ वर्स ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ठीक है ना। अगर पेशेंट को आपने नहीं इम्प्रूव किया और पेशेंट हॉस्पिटल से बार बार जा रहा है, कभी डीके के साथ जा रहा है या हाउ के साथ जा रहा है, या पेशेंट जा रहा है कि फुट के ऊपर ऐसा बन गया, हील ही नहीं हो रहा, या जा रहा है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के साथ, या एंजाइना हो रहा है बार बार, तो ऑब्वियसली वो हॉस्पिटलाइजेशन की सारी कॉस्ट, उसके विजिट्स फिजिशियंस और स्पेशलिस्ट को दिखाने को अगर एड ऑन करें उसके ट्रीटमेंट से, तो शायद कुछ बैलेंस हो जाता है। सो जो पेन डिवाइसेस और न्यूअर एनालॉग इंसुलिन हैं, दे आर अ बिट एक्सपेंसिव, but they improve convenience, they have the ease of use, and they have lesser side effects as compared to the conventional. So now we will be talking about the last part of my presentation today, which is conventional versus analogs. So conventional insulins तो मैंने आपको बता दी कि human insulins जिन्हें हम कहते हैं, वो अलग-अलग भी मिलती हैं, वो प्रीमिक्स फॉर्म में भी मिलती हैं, जिन्हें हम बायोफिजिक इंसुलिन कहते हैं, जिसमें 70% आपकी ह्यूमन इंसुलिन एनपीएच होती है और 30% जो है वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है। लेकिन जो प्रीमिक्स एनालॉग्स है वो इसी की समझ लें नेक्स्ट जनरेशन है। ये भी प्री मिक्स में भी मिल जाती हैं आपको बायोफिजिक एनालॉग्स, जिसमें सॉल्युबल इंसुलिन एनालॉग रैपिड एक्टिंग होता है, और जो प्रोटामीन क्रिस्टलाइड इंसुलिन एनालॉग है वो आपका लॉन्गर एक्टिंग होता है। They are available in the forms of different combinations, different strands by different companies. Common नाम आपको जो पता है उनमें आपने सुना होगा कि analogs के अंदर Novomix भी है, Humalog भी है. So these are some of the things that you come across in your daily practice. ठीक है? So इसका फायदा ये होता है कि जो pre-mixed insulin analogs हैं, उसका जो 30% soluble insulin होती है, which is S part, which is short acting or rapid acting insulin, it is rapidly absorbed from the subcutaneous tissue and it covers your perennial insulin requirement. और जो 70% इसका part है, that is the insulin protamine की form में है, that is absorbed more slowly and thus addressing your basal insulin needs. So it is actually a basal +1 या basal bolus, but in one pen form or one combined solution. So premix suspensions जो हैं उसमें rapid acting insulin analog और intermediate acting protamine insulin analog combine किए होते हैं. Insulin S part which is rapid acting के साथ जो आती है वो 30 है और Novomix 30 के नाम से आपके पास अवेलेबल है, और इंसुलिन लिस्प्रो जो हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है वो एलाई लिली वाले बनाते हैं. ह्यूमोलॉग 25, 50, 75 डिफरेंट स्ट्रेंथ्स के अंदर हमारे पास अवेलेबल होती है. कन्वेंशनल इंसुलिन हमारे पास और भी कंपनीज की अवेलेबल हैं, जिसमें आज जो गेट्स आपको स्पॉन्सर किया हुआ है उनकी भी अवेलेबल है, इंसुगेट, बेजाजीन भी उनकी अवेलेबल है, आपको पता है. सो दीज आर द सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट्स दैट इज इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस. अब जो प्रीमिक्स ह्यूमन इंसुलिन होती हैं, दो कंपोनेंट्स हैं उसके, एक बेजल है और एक बोलस है, जो मैंने आपको बता दिया है कि बेजल आपका ओवरऑल कवर करता है डे को और बोलस आपकी मील्स की एक्सकर्जन्स को कवर करता है. सो बेजल का एक्शन पोटेंशियल ऐसा है कि थ्रू आउट द डे ये कवर करता है, और बोलस जो है वो शॉर्ट एक्टिंग होता है, वो मील्स को कवर करता है. लेकिन जो प्रीमिक्स एनालॉग्स हैं दे हैव अ डुअल रिलीज इंसुलिन कॉन्सेप्ट. सो इसमें जो फिजियोलॉजिकल इंसुलिन की प्रोफाइल होती है, जिसमें एक बेजल कंपोनेंट होता है और एक मील रिलेटेड पीक्स होती हैं जो हमारे खाने के साथ शुगर लेवल्स होता है, उसके लिए रिस्पॉन्स में जो इंसुलिन रिलीज होता है ये उनको कवर करते हैं.
and they have rapid acting insulin analog together with a basal insulin, providing a physiological insulin requirement जो हमारी body की है, उसको they may meet the needs, and therefore they are very close to the normal physiology of the human body and have a better efficacy. Different premix insulins और formulations को बहुत सारी studies में cover भी किया गया है. अगर मैं ये आपको आज बताना चाहूँगी तो I think हमें बहुत we will need lots of time for this because इस पे इतना data है और इतना काम हो रहा है. But just to give you an idea कि जो insulins प्रीमिक्स फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है वो फिजियोलॉजिकल इंसुलिन रिक्वायरमेंट को मैच करने की कोशिश है, जिसमें एक बेसल कंपोनेंट है और एक बोलस कंपोनेंट है. हर पेशेंट का रिस्पांस फर्क होता है, हर पेशेंट का डाइटरी पैटर्न फर्क होता है, and you have to master the skill of adjusting this by checking your blood sugar profile of your patients and then adjusting and titrating the dose of these patients. लेकिन ये हमने देखा है कि ह्यूमन इंसुलिन वर्सेस जो एनालॉग इंसुलिन हैं, इनको जब कंपेयर किया जाता है तो they have a better or a higher efficacy and lesser side effects as compared to the human insulins जो analogues हैं, and with a lower risk of hypoglycemia in these patients. So with biphasic human insulin अगर हम इनका comparison करते हैं तो they have faster absorption, higher peak concentration, more rapid and pronounced glucose lowering effect, and duration of the action of the basal component is also matched with that of the normal physiological. इनके साथ जो आपने ख्याल रखना है वो special populations के अंदर है. Pregnancy में इसका limited clinical experience है insulin analogues का, so use caution से कीजिए. Lactation में there is no restriction on treatment, you can give them. Pediatric population में इसकी safety trials नहीं है. 6 to 9 years की age में कुछ safety trial हैं, but they are also very limited. But above 10 years of age, they are safe to use. और elderly, especially जो more than 75 years of age है और जिनको आप oral anti-diabetic drugs भी दे रहे हैं, उनमें risk of hypoglycemia थोड़ा सा ज़्यादा है as compared to a younger population. So you have to use them with caution. I will just wrap up my today's talk now with few words for you to remember and as a take-home message. And my dear colleagues, your words have power. Doctors are called opinion leaders of the society. Your patients take you as your Masiha, as Masiha. They come to you with pain. They want shifa, and they believe in you after God. And believe me, your words have power. If you tell them कि ये नहीं खाना तो वो सुनेंगे. बच्चा राख मना करता रहे कि अब्बा जी सोडे की बोतल नहीं पीने, उन्होंने कहना तेनू कुछ नहीं पता. डॉक्टर ने बताया है तो उनके ज़हन पे असर होता है. So your words have power. Give time to your patients. And remember that insulin is not a stigma. You have to convince your patients to take therapy if and when required. And there are some of the things, some of the common suggestions that I can give you, words which you can use to convince your patients. आप बताएं कि जी ये इंसुलिन तो जिस्म के अंदर ही बनती है, आपके जिस्म में थोड़ी कम है, इसलिए हम आपको बाहर से दे रहे हैं. So insulin is a natural therapy. नेचुरल थेरेपी पे लोगों का बड़ा बिलीफ होता है. कलवंजी खा लेंगे, शहद खा लेंगे, हर्बल खा लेंगे, टोटका कर लेंगे, दवाई खाते हुए उनको मसला होता है. So tell them it's a natural therapy. Insulin will improve quality of your life. This is one of the convincing evidence. Positive reinforcement कीजिए इंसुलिन देते हुए. आपका परहेज थोड़ा कम हो जाएगा, आपको लिबरल कर देंगे खाने पीने में, तो आपकी एनर्जी का लेवल बेहतर हो जाएगा, आपकी आंखें बेहतर हो जाएंगी, आपके गुर्दे का फंक्शन इंप्रूव हो जाएगा. आपको आपके जो आंखों का ऑपरेशन इतनी देर से इसलिए नहीं डॉक्टर साहब कर रहे कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, या आपके पित्ते की जो पत्थरी है उसका ऑपरेशन इसलिए नहीं कर रहे कि शुगर कंट्रोल नहीं है, आपकी सर्जरी हो जाएगी. सो गिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू योर पेशेंट्स एंड निगेट द फेटलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स इंसुलिन कि मैं ये आखिरी हल है डॉक्टर साहब, मैं तो जिंदगी भर के लिए इंसुलिन पे पड़ जाऊंगा, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, कोई दवाई मेरे पे काम नहीं करी. ट्राई टू falsify these false myths. Tell them that this is to improve the quality of your life. So putting principles into practice is what we all need to do. And remember कि blood sugar level 24 घंटे के लिए किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता. कुछ पेशेंट्स आपके पास आते हैं ना, हर आधे घंटे बाद शुगर चेक करके कहते हैं अब इतनी थी, अब इतनी थी. इसी तरह ब्लड प्रेशर का करते हैं,
अभी डॉक्टर साहब 140 था, फिर 120 आ गया था, फिर घंटे बाद किया 110 था, फिर जी 140 से थोड़ा सा ऊपर. So we are changing with every single moment. No, you cannot control for the entire 24 hours, and do not try to achieve this also. आपको achieve क्या करना है? एक adequate good control, and it has to be customized. जो patients ischemic heart disease के हैं, बहुत fragile हैं, बहुत weak हैं, बहुत old हैं, उनमें बहुत tight control की जरूरत नहीं होती है. यंगर पेशेंट्स के अंदर आप बेटर कंट्रोल कर सकते हैं. बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज जो कर ही नहीं सकता, वो जो कहती है कि मेरे जनाब घुटने नहीं चलते, आप उसको कहते हैं कि रोज 5 मील दौड़ लगाओ, कहती है मेरे तो डॉक्टर साहब घुटने नहीं चलते, मैं तो 5 कदम नहीं चल सकती. तो रियलिस्टिक गोल्स रखिए. और डेंजरस हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस. सो एल्डरली पेशेंट्स में, पेशेंट्स विद कोमॉर्बिडिटीज पे थोड़े से रिलैक्स रखें, बहुत स्ट्रिक्ट ना रहिए. एंड ये जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो काइंडली, ये मैं जूनियर कोलीग्स को ज्यादा बताती हूँ बिकॉज बहुत ट्रेंड है, इमरजेंसी से आज भी देखा तो लिख देंगे नोविडेट बीडी. अब मरीज बेचारे को नहीं पता कि बीडी क्या होता है. ट्राई टू राइट इन देयर ओन लैंग्वेज, उर्दू में बताएं कि दिन में लगानी है, 2 दफा लगाने से भी उसको समझ नहीं आनी. उसको बतानी है कि खाने से पहले इतनी देर पहले आपने यहाँ लगानी है, उसको समझा के भेजे. इंसुलिन का पूरा नाम लिखें और बताएं कि उसने पेन की फॉर्म में लेनी है, इंजेक्शन की फॉर्म में लेनी है, किस तरह लेनी है, और कटिंग करके प्रिस्क्रिप्शन पे ना लिखा करें. बहुत दफा मेरे पास पेशेंट्स आते हैं. अभी एक पेशेंट आए जिसने कोई और दवाई, किसी और दवाई के नाम से प्रिस्क्रिप्शन वाले ने पढ़ के उसको खिलाते रहे, और वो फिर देखा तो दवाई ही कोई और थी. क्योंकि डॉक्टर्स की भी हैंड राइटिंग माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होती है हमारी. सो ट्राई नॉट टू ओवर राइट और कट. अब तो बहुत प्रिस्क्रिप्शन इस तरह भी लिखे जाते हैं जिसमें प्रिंटेड फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, सर भी इसी तरह, प्रोफेसर साजिद से ही हमने सीखा है कि हम कैपिटल लेटर्स में दवाई का नाम लिखने की कोशिश करते हैं ताकि पढ़ने में गलती ना हो. जॉइंट हैंड राइटिंग में कई दफ़ा मिसरीड हो जाता है और गलत दवाई मिल जाती है. सो ट्राई टू बी काइंड टू योर पेशेंट्स, एंड व्हेन इंसुलिन यूज इज इमिनेंट, go ahead and start. Don't wait and be the leader, because all of you can be leaders. Thank you very much for your attention.